In previous lecture, we talked about existence and uniqueness of linear problems, and now I am defining a type of continuity which is known as Lipschitz continuity, or in differential equation we say it Lipschitz condition. So this was given by Rudolf Lipschitz, German mathematician, and it is the strong form of uniform continuity. And I'll give the formal definition in R2. So we take a subset of R2, a function f, which is a function of two variable fty from a to r, is said to either we say function is Lipschitz continuous, or we say that it this function satisfy a Lipschitz condition. So is said to satisfy a Lipschitz condition with respect to y if there exists a constant L which is positive, such that for any ty1 and ty2, so we compute this difference, and you know the definition of continuity in one variable, that you take 2 point x1 and x2, so fx1 minus fx2 less than epsilon for x1 minus x2 less than delta, and delta is a function of epsilon, and sometimes you get a relation that delta equal to epsilon or something, so then you got a mod of fx1 minus fx2 less than x1 minus x2. And here we have a function of two variable. When we will, I'm defining it in context of differential equation, so we will have a differential equation of this form. So you have two variable t and y, so our domain is a subset of R2, and a function satisfy Lipschitz condition with respect to variable y. दो हैं तो स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि कौन से के सेंस में, t के सेंस में या y के सेंस में. Definition would be similar if you take in t. So with respect to y, then you take 2 point y1 and y2 in that domain, and t is any point. So you compute this difference fty1 minus fty2 modulus. If this is less than or equal to a constant L times y1 minus y2, if you are able to get this relation, we say that f is Lipschitz continuous, or you can say f satisfy a Lipschitz condition with respect to y. Okay.
And this constant L is called Lipschitz constant. The constant L is called Lipschitz constant. And this continuity will be used in proof of existence and uniqueness theorem for nonlinear problem. That's why this is the main condition. That's why I have defined it separately. Now we will take few examples that how you check whether a function satisfies Lipschitz condition or not. So let us take few examples. First example, let fty is equal to 2y plus 1. Here y is a function of t, so you have t indirectly. Show that f satisfy a Lipschitz condition for every t and y. So firstly, you take 2 points in domain. So take ty1 and ty2 in domain. So compute the difference ty1 minus fty2, and you can write it. So this is 2 function is 2y plus 1, so 2y1, and here 1 will cancel out. You can take 2 outside. Okay, so condition says that less than or equals to, but here you are getting equals to. It's okay, perfectly fine. And there is no condition on t and y, so you can say that this function. एक्सक्यूज मी सर हाँ जी, सर हमने वो लिंक जो वहाँ पे एलएमएस पे दिया था वो ज्वाइन किया था पर उसमें तो क्लास कोई और ज्वाइन हो गई थी हमारी LMS पे कौन सा लिंक दिया था? 2 दिया था मैंने, नहीं? SOM2 कौन सी क्लास सर है? कैन यू प्लीज एक्सप्लेन दिस अगेन Okay, so this function satisfies a Lipschitz condition with the constant 2 for any t and y. So we just started a form of continuity which is known as Lipschitz continuity or Lipschitz condition. It will be used in the proof of existence and uniqueness theorems. So take a subset of R2. A function is said to satisfy a Lipschitz condition. You have a function of two variable. When you solve a differential equation, we will have dy by dx or dy by dt. So this function satisfies Lipschitz condition if you can write this difference fty1 minus fty2 less than or equals to L times y1 minus y2, where L is a positive constant. Then you say that this function satisfies Lipschitz condition with respect to y. So take 2 point y1 y2. लिपशर दोनों के सेंस में कह सकते हो, t के सेंस में, y के सेंस में, बट हियर वी आर टॉकिंग Lipschitz condition with respect to variable y. So this is the formal definition that
You have to find this difference. If you are able to write, then it's okay. And I have taken this example, so 2y plus 1, and and you can write here, so ft y1 minus ft y2 equals to 2 times y1 minus y2 less than or equals to. So here L constant is 2. So you can say this function satisfies Lipschitz condition. All of you need to join class of ordinary differential equation, OD वाला जो है. मंडे आई थिंक मंडे SOM 3 पे है एंड ट्यूसडे एंड वेडनेसडे SOM 2. Let us take one more example. So in this example, you can see there is no condition on t, no condition on y. So you can say for any t and y. But in some example, you may have some conditions. For example, let us take f t y equals to t y square. Check whether f satisfy a Lipschitz condition in R2. So what you do here? So you try to compute this difference. Okay. So f t y1 is t y1 square. Function is t y square. And you can take t outside and factor it y1 square minus y2 square, a square minus b square. So with the definition you need this, but here you need a constant. But if you take domain R2, t can be anything. Y value can be anything. So can you say this function satisfy Lipschitz condition in R2? Hmm? Can you say that mod of t will be bounded? Hmm? नहीं होगा ना. t can be infinity. तो अगर यहाँ पे कांस्टेंट आ जाता जैसे पहला एग्जांपल था, then you say that it is Lipschitz. But here, so the term mod t y1 plus y2 may not be bounded in R2. So f is not sometimes we say that f is not Lipschitz. But if you take, let us say you have this domain, let us take rectangular in R2, this region, and let us say t lies between from 0 to 1 maybe, and y t 0 to 1 and y maybe maximum is 2. So if you take bounded region, some in R2 you can take rectangle or circular region, then this term will be bounded. जो बाउंड्री वैल्यू होगा मैक्सिमम, जैसे y मैक्सिमम 2 है तो आप यहाँ पे 2 फिट कर दोगे इनको. मान लो t मैक्सिमम 1 है, you will fit t 1. So in that case, if you have a bounded region, then this function is Lipschitz. So Lipschitz continuity depend on domain. Okay.
and you must not restrict to notations. We can also write ftx. Okay, so in place of y I am writing x. और फंक्शन को एक लिखने का तरीका होता है कि जैसे आप ये लिखते हो t कॉमा x, so t is independent variable and precisely x is a function of t. So we write in order that first independent variable, then dependent. And we are talking Lipschitz continuity in the sense of dependent variable. Okay, so here x is a function of t. So in place of y, I have written x. So let this function be defined on region. So जो region है आपका pair px in R2, but we have limit here t0 to 1, x0 to 1. So check Lipschitz condition. Can you sketch the region t0 to 1, x 0 to 1? So this rectangular region. Okay, so in this region you need to check this condition. So take 2 point tx1 and tx2. So this is my region A. In A, then you compute the difference ftx1 minus ft x2, which is t square root of x1 t square root of x2. So you can write t outside and you got x1 minus x2, but here you need x1 minus x2. तो कैसे लेके आओगे उसको? हमें x1 माइनस x2 चाहिए, ये स्क्वायर रूट है. This you have, so you can multiply with the opposite sign, multiply and divide with same number. And in numerator you can write a minus b, a plus b, that will be a square minus b square. So what you got, t and 1 by x1, and here you got x1 minus x2. Okay, try to try to get this x1 minus x2. Now t is bounded, maximum t is 1, so you can replace t with 1, so this side will be bigger. Okay, but 1 by something, so what you have here, 1 by this ratio, 1 by x1 plus x2. Can you say this will be bounded in that region? Can you say x lies between 0 and 1? 0 equals, तो जो x1 x2 वैल्यू है वो x की वैल्यू है, they can be 0 or near 0. So 1 by 0 will not be defined. So this term won't be bounded. Okay, so f does not satisfy Lipschitz condition due to this problem. हाँ, अगर ये numerator में होता, ऊपर होता, then you can fit 1, maximum x is 1, then there is no problem. But 1 by this can create problem
So what we conclude, the term 1 by square root x1 plus x2 cannot be bounded in in region A. So f does not satisfy a Lipschitz condition. Okay, any doubt? And if you have observed the definition of uh, Lipschitz continuity, then you have this ratio ft(y1) minus ft(y2). And if I take y1 minus y2 on this side, so then you can write uh, less than or equals to L. And from this, you can say function change divided by y change. कैन यू, तो ये क्या बनेगा, कौन सा डेरिवेटिव बनेगा ये? डेरिवेटिव आप लिखते हो, डेरिवेटिव यही होते हैं, फंक्शन कितना चेंज हुआ डिवाइड बाय फंक्शन चेंज हुआ y के सेंस में डिवाइड बाय y कितना चेंज हुआ, प्रोवाइडेड दैट चेंज इज स्मॉल, देन व्हाट विल बी दिस, व्हाट विल बी लेफ्ट हैंड साइड, this will be partial derivative with respect to y. Okay, so next is small result, a lemma which says that you can check, lemma are small statements that are used to prove further big results. So this lemma says that you can use derivative to check Lipschitz condition, and sometimes it's easy to find derivative and then check derivative. So Lipschitz continuity has a relation with derivative. So this says that suppose partial derivative of f with respect to y, this is continuous on some closed rectangle A in R2, then prove that f's, or you can say directly f is Lipschitz with respect to y in A. Okay, so what is given? The derivative of f with respect to y, it is continuous. So what is given? So since I am writing derivative in short, so in place of curly f by curly y, you can write fy. This derivative is continuous in closed rectangle A. Therefore, अब ये फंक्शन की प्रॉपर्टी है, एक फंक्शन कंटिन्यूस हो क्लोज सेट पे, तो क्या होगा, देन इट्स मैक्सिमम then it attain its extreme value. अगर फंक्शन कंटिन्यूस है क्लोज सेट पे, then it attains
its extreme value or its maximum, you can put modulus. So it attain its maximum value in क्लोज रेक्टेंगल ए, और इस थ्योरम का नाम भी है सो बाय एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम, बाय एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम, ए फंक्शन अटेन इट्स मैक्सिमा और मिनिमा इन क्लोज सेट। अब मैक्सिमम तो होगा तो कुछ ना, जो भी मैक्सिमम होगा लेट, जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी इसकी, लेट एफ टी वाई लेस देन और इक्वल्स टू के, के मैक्सिमम है। ओके, नाउ अब हमने रिलेट किससे करना है, डेफिनेशन तो ये है उसका, आप ये डिफरेंस लिखोगे एफ टी वाई वन माइनस एफ टी वाई टू, इस इन दोनों को रिलेट करना है आपने, डेरिवेटिव और इसको। ओके, तो नाउ वी इंट्रोड्यूस अनदर वन, सो नाउ बाय मीन वैल्यू थ्योरम, so we apply mean value theorem on this difference ft(y1) minus ft(y2). You have studied this theorem in one variable, that was, if you remember, fb minus fa equals to f dash c b minus a. C is a point between a and b. पढ़ा था ना मीन वैल्यू थ्योरम वन वेरिएबल में, इसी से आप रोल्स थ्योरम वगैरह बनाते हो। तो सेम थ्योरम टू वेरिएबल में भी एप्लीकेबल है, but instead of ordinary derivative, and since you are talking in with respect to y variable, so here you will have curly f by curly y at some point ty, और जैसे यहाँ पे x की जगह c लिखते थे और यहाँ पे आप y की जगह लिख दोगे c, और जो c का वैल्यू होगा वहां पे जो c था a और b के बीच में था, और यहाँ पे भी सेम है फॉर सम c between y1 and y2. Okay, so same theorem in two variable, so we are writing mean value theorem with respect to variable y, so derivative with respect to y will occur on right hand side, and in place of y you will have some point c, and c lies between y1 and y2. Okay, so now use first, so you have written in first that derivative is bounded by k, so here you can write k and right hand side will be bigger. Okay, this is a derivative, and maximum derivative for any ty, that is k. So I am using first here on the right hand side. Okay, so you can write less than k times y1 minus y2 using first. तो हो गया वेरीफाई, नहीं यही चाहिए था हमें। सो लिप्सेट कांस्टेंट की जगह यहाँ पे क्या आ गया, एल के, एल की जगह के आ गया। Okay, so you can say therefore f satisfy a Lipschitz condition in a with the constant Lipschitz constant L equals to k. And what is k or L? This is the bound of derivative. So in other words, you need to find the derivative. If derivative is bounded, then you can say this function satisfy a Lipschitz condition. That's it.
But if region is not bounded, ये तो क्लोज था ना, तो बाउंडेड था. If region is not bounded, curly f by curly y derivative may exist and it may be bounded. So let's verify first one example, then we will talk about its inverse. Let's solve first one example. For example, you have a function f t y which is mod t e power t y plus t sin t plus 2y. Okay, so check whether f is Lipschitz on any closed rectangle. Can you help me to write how we can use lemma? Can you help me? बोलो, क्या लिखेंगे? अगर पिछला रिजल्ट यूज करना है, let f of t पार्शियल y डेरिवेटिव निकालो इसका. इधर गो बाय डेफिनेशन, बट यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी. साइन टी प्लस वाई यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है आपका. एक्सपोनेंशियल टी वाई, तो वहां से आपको वाई वन माइनस वाई टू निकालना मुश्किल होगा. दैट्स वाई गो टू सेकंड दैट रिजल्ट, देन फाइंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई mod t as it is with respect to y e power ty e power ty, और ty का y के सेंस में y का 1 t as it is आ जाएगा यहाँ पे. फिर साइन टी टू वाई का t तो एज इट इज रहेगा. साइन का डेरिवेटिव क्या आएगा? cos कॉस प्लस माइनस है प्लस plus प्लस t प्लस 2y. ओके, फिर और क्या आएगा साथ में? t तो एज इट इज, फिर 2y 2t 2t. 2 दैट्स इट. ओके, अब रिजल्ट क्या कहता है? If derivative is continuous on some closed rectangle, then it is Lipschitz. तो आपने चेक क्या करना है? डेरिवेटिव की कंटिन्यूटी चेक कर लो. कंटिन्यूस है ये? कंटिन्यूस है ये? टी कंटिन्यूस है, मॉड टी कंटिन्यूस है. डिफरेंशिएबिलिटी की बात नहीं कर रहे हम. ई पावर टी वाई 2t कंटिन्यूस है, कॉस कंटिन्यूस है. सम प्रोडक्ट ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूस. So which is continuous? Okay, on any rectangle A. So therefore f is Lipschitz. So just check the continuity of the derivative. हाँ, अगर आपने कांस्टेंट निकालना के लिए कहे तो फिर आपको बाउंडेड भी शो करना पड़ेगा. अब हमने यहाँ रेक्टेंगल बताया नहीं ना, रेक्टेंगल क्या है. अगर आपने लिपशिट्ज कांस्टेंट निकालना है वो के ही है. सो फाइंड द मैक्सिमम ऑफ डेरिवेटिव, दैट विल बी लिपशिट्ज कांस्टेंट. Okay, so just write its derivative and check it continuity of the derivative. If it is continuous, then it is Lipschitz. And one important remark: converse of this lemma is false, or you can say it is not always true. Converse of this lemma is false.
For example, let fty is t mod y on rectangular region. अब रीजन को कई बार हम ऐसे भी लिखते हैं -2 क्रॉस -2 to 2। इसका मीनिंग भी वही है जो हमने पहले लिखा था, ये लिखा था ना मैंने, ये सेम चीज है, अलग अलग वे है लिखने का। इसका मीनिंग क्या है, जो फर्स्ट है टी की वैल्यू है टी वाई, टी -2 to 2 है, ठीक है, -2 to 2, और जो y है वो भी -2 to 2, सो यू हैव रेक्टेंगुलर रीजन। ओके, यहाँ पे भी होगा -2 to 2। So in that region, firstly check Lipschitz condition ty1 minus ft। कन्वर्स क्या बनेगा, if f satisfy Lipschitz condition then what you can say about derivative, यही है ना, if derivative is continuous then f is Lipschitz। कन्वर्स क्या बनेगा, f is Lipschitz, can you say that derivative is continuous। तो पहले हम Lipschitz चेक कराते हैं इसको, हम ट्रेडिशनल डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जाएंगे। सो दैट विल बी मॉड टी एंड टी, सॉरी ये लगा दीजिए, टी y1 माइनस टी y2। सो यू कैन राइट इट मॉड टी मॉड y1 माइनस मॉड y2। अब ये इनइक्वालिटी एक होती है ना, मॉड ए माइनस मॉड बी, अगर पॉजिटिव का डिफरेंस हो दैट इज लेस देन और इक्वल्स टू ए माइनस बी। तो अगर इसको यूज करोगे तो मॉड टी y1 माइनस y2, और t का मैक्सिमम कितना है 2, सो 2 टाइम्स y1 माइनस y2। ठीक है, तो एफ लिप्सिड है, क्लियरली दिख रहा है ना यहाँ पे, with the constant L equals to 2। Okay, so therefore f is Lipschitz with the constant L equals to 2। But can you say that its derivative is continuous, t mod y, mod y का डेरिवेटिव क्या होगा, mod x का डेरिवेटिव कंटिन्यूस होगा। रीजन के अंदर जीरो भी है, तो जीरो पे क्या होगा, तो सिंपल देखो तो मॉड y, अगर y पॉजिटिव है तो ये y है, डेरिवेटिव 1 हो गया। अगर y नेगेटिव है तो दिस इज -y, so डेरिवेटिव इज -1, बट एट 0 this is not defined। So what you say, however, derivative of f with respect to y does not exist at point t comma 0 when y equals to 0 in A। So conversely you cannot say if f satisfy Lipschitz then I am not sure whether I can say that derivative is continuous। so यहाँ तो exist ही नहीं करता, अगर exist करेगा तो continuity तो बात की बात है ना। so derivative does not exist at y equals to 0। but अब मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि ये कंडीशन डोमेन पे डिपेंडेंट है। अगर डोमेन कुछ और होता, लेट अस से यू हैड टी, तो वही रख लो सेम, चाहे आप -2 to 2,
अगर आपका y, यहाँ कुछ t को भी चेंज करना पड़ेगा, दोनों का इंटरसेक्शन। आपने ये रीजन लिया ना, ये रीजन इसमें चलो कर लेते हैं। मान लो ये रीजन था 0 था, मान लो आपका रीजन ये है, क्या रीजन आपका, let us say this, you have this region, let us say you have this region, okay, then f satisfy Lipschitz condition, then you can talk about converse. तो 0 का यहाँ पे प्रॉब्लम था। so these condition typically depend on domain. If you change the domain, conditions may change. Okay, so in this lecture we have studied Lipschitz continuity or Lipschitz condition, and this is the strong form of uniform continuity. Any doubt you want to ask?